Yes, today we will continue the same theorem that the length of the outer measure of an open interval is its length. So first case number one that we have done so far, that if I is the closed interval a to b, then m star I is equal to length of the closed interval AB, that is equal to B minus A, or we can say that which is equal to length of I. Now, case number 2. So theorem that we are doing, this is the second part number 2, outer measure of an interval, right? So now, when I is a finite interval, when I is any finite interval, कोई भी finite interval है, ठीक है, पर्टिकुलरली हमने क्लोज इंटरवल के लिए कंडीशन प्रूव कर दी, अब हम कोई भी फाइनाइट ओपन इंटरवल ले लेंगे, फाइनाइट इंटरवल ओपन है, सेमी है, जैसे भी है, ठीक है, लाइक दिस, अगर हम ये इंटरवल ले लें, ये वाला, दिस इज अ फाइनाइट इंटरवल, राइट, क्योंकि फाइनाइट का मतलब इसके एंड पॉइंट्स इंफिनिटी पे खत्म नहीं हो रहे, इट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी, इट नॉट एंड्स विद इंफिनिटी. Then for a given epsilon greater than 0, there exists a closed interval J, which is contained in. Definitely एक open interval, एक आपके पास अगर एक finite interval है, उसके अंदर एक closed interval include हो सकता है, such that इस तरह से लेंगे कि जो length of J है, it is greater than length of I minus epsilon. This point you have to remember कि इस तरह से हमने J चूज किया कि जब हमने लेंथ ऑफ J निकालना, वो किससे बड़ा हो गया, लेंथ ऑफ I से. जब I में से क्या माइनस किया, लेंथ ऑफ I में से जब एक छोटा सा नंबर एप्सिलॉन हमने चूज किया. सो लेंथ ऑफ it implies length of I minus epsilon is less than length of J. And length of J क्या है, एक क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है जी. केस नंबर 1 क्या कहता है, लेंथ ऑफ द इंटरवल इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ द इंटरवल, दैट इज m स्टार j, एंड m स्टार j इज द, एक आपके पास क्या आ गया, आउटर मेजर. आउटर मेजर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर ऑफ I, सॉरी, इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मेजर ऑफ I. It is less than or equal to, and because J is contained in A, and by the property that if A is contained in B, M star A is less than or equal to M star B. So ये हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है. अब next is I is contained in I closure. It implies M star I is less than or equal to M star I closure. तो यहाँ लगा देंगे, this is again less than or equal to M star I closure. Right, and I closure of a set is always a closed set. अगर रियल लाइन में बात करें तो ये क्लोज्ड इंटरवल बनेगा, और जो क्लोज्ड इंटरवल है बेटा, उसका आउटर मेजर उसकी लेंथ के बराबर है, राइट. एंड लेंथ ऑफ I closure, अब I सपोज करो I एक इंटरवल लिया, ये मैंने ओपन इंटरवल है. What is I closure? This is the closed interval AB. And what is the length of I? The length of I will be, what is the length of I? The length of I is B minus A. What is the length of I closure? This is also equal to B minus A. It implies the length of I closure is equal to length of I. So what we have proved that, thus for each epsilon greater than 0, length of I minus epsilon is less than or equal to, जो हमें चाहिए वो हमने उठा लिया, m star I is less than or equal to length of right. Let epsilon tending to, हर epsilon के लिए result hold करेगा, तो we will taking epsilon tending to 0, it implies what we are having, length of I is less than or equal to m star I is less than or equal to length of I. तो जहां से inequality शुरू हुई वहीं पे खत्म हो गई. It implies length of I एक बारी m star I से छोटा है, एक बारी वो उससे क्या है, बड़ा है. So therefore m star I is equal
equal to length of I. So this is the case number 2 when I is a finite interval. Now we will do the case number 3. When I is an infinite interval. When I is an infinite interval. Infinite interval means a to infinity ले लिया, like मैंने a to infinity ले लिया या मैंने infinity to b ले लिया, तो this is the infinite interval. Then for any given real number k greater than 0, there exists a closed interval j contained in I such that length of j is equal to k. So what they have, क्या लिया, अगर हमारे पास I एक infinite interval है, then for any given real number k greater than 0, there exists a closed interval j contain, definitely अगर मैं a to infinity लेती हूँ, ठीक है जी, तो उसके अंदर definitely एक interval b to c आ सकता है, ठीक है, b और s इस तरह से लिखेंगे, b to c is contained in the interval. अगर सिंपल एक एग्जांपल लेना है, एक नंबर्स का एग्जांपल लेना है, मैं वो ले लेती हूँ b और c में, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b एंड c. सो suppose we have the value, we have the interval 2 to infinity, ठीक है, then I will take any 4 to 5. I have taken the closed interval which is contained in the interval 2 to infinity, ठीक है. So there exists a closed interval j contained in I such that length of j is equal to k. अब यहाँ पे मैं, यहाँ ये मेरा j है, j is contained in I है, this is my I, the length of j that is equal to 1 which is equal to k, right? Then by the property, now j is contained in I. It implies m star j is less than or equal to m star I, ठीक है जी. It implies, इसको इस तरह से लिख लेंगे, m star I is less than or equal to m star j, and m star j क्या है, इंटरवल है, क्लोज इंटरवल. केस नंबर 1 कहता है क्लोज इंटरवल means outer measure of the closed interval is its length. So this is length of j, and length of j is equal to k. It implies m star I is greater than or equal to k for every positive number greater than 0. अब मैं यहाँ से एग्जांपल लूँ, जो हमारा एग्जांपल चल रहा था, तो यहाँ से मेरा m star I क्या आ गया, m star I की वैल्यू k से ज्यादा है. व्हाट इज k? k की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1. ग्रेटर देन 1 कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइटली मैनी, ठीक है, कोई लिमिट ही नहीं है. इसका मतलब ये हुआ कि इट इम्प्लाइज इन दिस केस m star I is equal to infinity. M star I is equal to infinity, which is equal to length of I. राइट, अब इसकी लेंथ ऑफ I निकालिए. आपको पता है ये अगर मेरा इंटरवल I है, दिस इज द इंटरवल I, तो इसकी लेंथ कितनी है, डेफिनेटली इसकी लेंथ कितनी है, इन्फिनिटी है. सो m star I is equal to infinity, which is equal to length of I. So whatever be the value, whatever the interval we have, if we will have the finite interval, then it will give the finite value, and if it will have the infinite interval, then it will give the infinite length. It will give the infinite length. Finite interval के लिए finite length, infinite interval के लिए infinite length. Is it clear? So that's why at the end we have written that m star I, the outer measure of the interval I, is equal to length of I. That is the motive of our theorem. So for every case, either the interval is finite, or it is a closed interval, or it is any interval, infinite interval, every time m star I is equal to length of I. So therefore, we can conclude that the outer measure of an interval is its length. So I hope this is clear to all of you.